That's right, it's time to bleed orange, and I'm sure all of you have a lot of questions to ask Arjun and Mr. Modwell. So we're going to have a small interaction. The floor is now open for any questions that you all may have. A gentle request to all of you to please restrict your questions only to the occasion today and for the launch event that we have this afternoon. रहने दीजिए गले में. अच्छा पहन के रखो नहीं यार फिर पसीने छूट जाएंगे. Hi Arjun, this is Urvi here. Hi, how are you? I'm good. Where are you working now? Firstly. I'm freelancing for Bollywood Life. Huh? Bollywood Life. Oh, how nice. How are you, Urvi? Happy Diwali to all of you all. Wish you the Belated, same. sorry. Arjun, firstly, you've been a huge football fan. What took you so long to associate yourself with the football team? Ask Gaurav yaar. मैं तो तैयार था. My connect with the FC Pune City has been there since the first season of ISL. जैसे कि आपने कहा, I'm a huge fan of football. I've been for many years. I've followed world football, whether it's European, whether it's South American, all the leagues. And I think I was a very excited person when the league came to India, when we had a proper official league at this level, with the telecast levels and the performances and the stature of players coming in and the infrastructure. It doesn't always mean that you have to jump right in. You have to also wait for the right opportunity, the right fit. कई बार क्या होता है, आप चीजें कर लेते हो हड़बड़ाहट में, पर you don't end up finding the connect with the correct people. I'm not somebody who's ever been in a rat race. The excitement has always been to connect with the correct people. I know them from way before. So the comfort level and of course the common thought process takes a few meetings, maybe takes a year to figure out that, okay, we are the right fit. Because I'm in it for the long term, they're in it for the long term, this league is in it for the long term. There is no point jumping the gun and saying, you know, jo mila usse kar lo. It has to make sense for you. They've given me the respect to allow me to be part of the team as an owner where I can be involved in decision making, and that is not something that I take lightly. So I think organically सही लोगों के साथ सही टाइम पे सही चीज होने का भी एक अपना मजा है. And I think I'm also in a place in my life now after now 5.5 years of working. I think I'm in a position where I can expand my horizons. And I would like to pursue my passions in various ways, and this happened at the correct time, I think. We've dabbled on it for quite a few occasions, but it's finally come to fructification now, and I'm very, very happy about it. I think it's the right time for me, and I hope for FC Pune City also. I also have a question for you, Mr. Gaurav. Hrithik Roshan used to be the co-owner for Pune FC. What happened with him? Why is he no longer associated with it? So Hrithik is still the shareholder, but Arjun is now the new face. He's really passionate about football. We've been talking about it as he was speaking. He was with us in the first season. We kept talking about football. और अब मजा आएगा. Arjun, hi. Hi Seema ji, कैसी हैं आप? Very well, thank you. If you had to do a biopic on a sports star, who would it be? यार इतनी बन रही हैं आजकल, इतनी बन चुकी हैं. I would like to do an underdog story. I think those are the most exciting biopics. And यार offhand बोलना मुश्किल है. I hope we have a footballer coming through the ISL and our teams that I would love to emulate at some point and maybe play a footballing star or a footballing character. I don't know. I mean, MS Dhoni for me is an inspirational name, and they've done justice to Neeraj Pandey sir, did amazing justice to his story, and we got to see a new side. किसी भी इंसान के बारे में जब आप कहानी बनाते हैं, उनके अलग पहलू अगर जानने का मौका मिलता है, तब कुछ मजा आता है बायोपिक में. तो मैं ज़्यादा करीब से जानता नहीं हूँ इस वक्त और कौन है ऐसा जो एक्साइट करता है. मुझे लगता है युवराज सिंह बहुत ही विचित्र इंसान भी है, जो उनकी जर्नी रही है, जिस तरह के उनके उतार चढ़ाव रहे जिंदगी के. दादा सौरव गांगुली है, द मैन हु इज डिफाइड ऑल. तो ऐसे क्रिकेट में बहुत है. आई थिंक टू आइसोलेट क्या होगा, वो हेडलाइन बन जाएगी और फिर वो गलत तरीके से इस्तेमाल की जाएगी. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं युवराज की या सौरव गांगुली की करना चाहता हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक जर्नी होती है तो बायोपिक करने में मजा आता है. तो आपके पास कोई होगी तो मुझे प्लीज देना, मैं कर लूंगा. Hi Arjun, Ilika here.
this side. Hi, Center, Elika. I still on have to reply to your. left. I still have to Yes. reply to your message. I'm That's really okay. sorry. My sincere apologies. That's okay. Okay, we all know you are. And we will do it. Okay. Yes. So you are promising me in front I'm of the promising cameras you now. live in Okay. front of your fraternity friends that the commitment I've made to you shall be fulfilled. Thank you. We all know you're a Chelsea fan. Yes. If a long shot, if you now you're an owner and you are also involved in the decision making and of the players, if you have to get some Chelsea player on board, your favorite, whom would that be? You know, I would love to get Frank Lampard or John Terry here. I mean, goes without saying, they're iconic names. They've been wonderful servants for Chelsea. They're passionate. They're everything a footballer and a human being should imbibe when it comes to being on the field and off it. Two amazing superstars who've defied a generation, and Chelsea Football Club. But like I keep saying, I would like to believe that we will eventually in India also have people like that, our kids and the future generations will look up to. Chelsea is something very close to my heart. I'm a fanboy. I can't even say that I blush when I met them. All of them I did blush. But I think I would have to say John Terry would be an amazing fit for any football club here. He's a lion-hearted player, and I think he's everything that football stands for. The never say die attitude, the sportsman spirit. So he would be an amazing fit. Also, under 17 FIFA, Yes. you know, it came to India. But then, where do you think the main Indian football team lacks, you know, to make a mark in the international circuit? Yeah, the thing is now we started a bit late in terms of infrastructure. It's not about the passion. I truly believe today you give a child a football, he'll still start playing on the streets. But there's only so much that can teach you. And in a country where there are a variety of sporting options available, schools don't really indulge in football because the grounds are just huge. You get confounded to playing sports that are available within your school and within your growing years. So I feel the formative years for children are important. And I feel now you have AstroTurfs available. You see the television boom of having the Premiership, having the Bundesliga, having the La Liga, having all the leagues playing out. Like every night if I watch TV, I only watch football, honestly. And you can flip channel after channel and you'll get all the football matches happening. We get more football matches in India than they get in England. When I was in England shooting for Mubaraka, they don't actually telecast half the matches live that we do in India. So the connect is huge. The infrastructure has been missing. So we've been lagging behind. I think ISL is the perfect platform. We as a team, FC Pune City, have started out being one of the first teams to actually have infrastructure in place to give youth a chance, to give the women a chance, to give the under 18s, under 16s a chance. So what happens is it allows people to pursue the passion and turn it into a profession and have hope that there is decent pay for it. See, it's very important. At the end of the day, it is a job also for people. When they take up a sport, they have to look at the bigger picture. If you're allowing them a foundation to think that this can be something that they can make their life out of, I think many more people will end up pursuing it and many more parents will indulge their children to go out there and play sports more often. And I think it's a big thing in the last 3-4 years that's happened. There are a lot of sports. I mean, look at Kabaddi. It's evolved very fast. So I think it comes down to a lot of factors. We are lagging behind because of certain factors, because we've been a cricket-loving nation for many years, which is amazing. But now I feel there's an open-mindedness in the youth to give other sports a chance. And your kids, my kids, they'll all flourish because of that. So, der aaye par durust aaye wali baat hai. I think it will benefit at some point. And I hope sooner rather than later. Just one more question from just one more. You've always, you know, spoken about you being, always wanting to be an actor since you remember. Always. I mean, we have never heard anything else from you. But No, I wanted to be a director actually. okay, in films basically. But since- if it ever came across your mind that maybe you could have picked up any sport, or you ever had that fleeting thought of maybe becoming The big issue, Elika, that time was that I used to be like a football. So I used to look like a basketball. I was a ball. And I was having a ball of a time just watching sports. I never actually ended up playing anything. As a kid, if there's one regret I have, is that I didn't play enough sport as a kid. And I feel a sportsman's discipline, no matter if you continue being a sportsman, but the fact that you grow up playing a sport gives you a certain discipline, decorum, passion, will, drive. I do regret that. If I have one regret in my life, when I do have kids, I will make sure my kids are allowed to flourish and take on whatever sport they aspire to, every sport possible. Because I feel it's also important to send your kids out there to play.
Now we have better infrastructure, at least in cities. मैंने खेला नहीं यार बचपन में, मुझे उसका दुख होता है. और जब खेल सकता था तब मैं बहुत मोटा था, बहुत परेशान था. फिर पतला होके अब अंदाजा हुआ है कि अब मेरी उम्र का तकाजा देखते हुए कि यार मैं बचपन में अगर खेलता तो मेरी फाउंडेशन बेटर होती. अब जैसे हाल ही में हम लोग मैच खेल रहे थे, योर हस्बैंड वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट. When you're playing with an athlete, you're playing with an athlete. You can see MS Dhoni stroll through and not feel the pinch. For us, we are used to 7 minutes, 10 minutes, 20 minutes. To survive 90 minutes is very difficult. And I do miss it, in the sense I would have loved to pursue a sport wholeheartedly. But मैं नहीं तो कोई और सही. I'm sure somebody or the other will rise to the occasion. I'm certain. Like Ranveer plays football really well. So I think that there are younger kids, like I know Ahan, who's Sunil Shetty's son. He's fantastic at football. Tiger is so good at football. I've seen him play. So there are many kids who've grown up playing it. They'll be better at it. But I'm good at being an owner, so I'm going to try doing that. हाय अर्जुन, आलोक हियर. सबसे कैसे पहले हैं आलोक? बहुत बढ़िया. आप कैसे हैं? बस टिप टॉप. तो सवाल पहले तो मुबारका की एक नए रोल के लिए आप तैयार हैं अभी. थैंक यू. दूसरा ये है कि इस रोल के लिए आप कितने तैयार हैं? यार ये रोल ऐसा है कि रोज सीखते सीखते सीखूंगा. एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है सीखने के लिए चीजें. ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि मैं एक ओनर की तरह सोचता हूँ. मैं सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, अपने आप को आजमाना चाहता हूँ. आई वांट टू लर्न ऑन द जॉब. आई वांट टू लर्न बाय बीइंग एज इन्वॉल्व्ड विदाउट बीइंग इंटरफियरिंग. So for me, it's a new step, obviously, and I'm excited. But I've seen my colleagues. I mean, Ranveer is an owner, John is an owner. I've seen the flourishing energy that comes with having people who are involved. It always makes a difference. Like I know how involved even an Abhishek is, for that matter. I would like to learn. I would like to observe, and hopefully by next year, I'll be even more involved on a day-to-day basis. इस वक्त क्या है? अभी सीजन शुरू होने वाला है, तो आई जस्ट वांट टू बी देयर एज अ सपोर्ट सिस्टम एंड सीप माई सेल्फ इनटू एम्बेडिंग माई सेल्फ. यार फैंस के साथ कनेक्ट बनाना जरूरी होता है. मैं वो भी चाहता हूँ. मैं समय बिताना चाहता हूँ टीम के साथ. मैं जाना चाहता हूँ पूना. मैं सबसे मिलना चाहता हूँ. मैं समझना चाहता हूँ. तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा. तो ये सीजन आई एम गोइंग टू यूज एज अ फाउंडेशन फॉर माई सेल्फ एंड होपफुली आई विल बी मोर इन फ्लो फ्रॉम द कमिंग सीजन. एंड थोड़ी सी बात अगर आप अपने फिल्मों के लाइनअप के बारे में भी जी, करें, जी, जी. क्या एग्जैक्टली चल रहा है और क्या डेवलपमेंट है उस पर? सर चल तो इस वक्त प्रेपरेशन रहा है दिवाकर बैनर्जी के लिए. संदीप और पिंकी फरार जो मेरी और परिणीति की अगली फिल्म है, यशराज प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है अगले 10 दिन में नॉर्थ इंडिया में. तो उसकी तैयारी चल रही पिछले, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो शूटिंग 2 महीने की, प्रेपरेशन मेरी 3 महीने की है. तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सफर रहा है. ही इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर. बहुत मजा आ रहा है उनके साथ काम करके और बहुत अद्भुत विचित्र कहानी है. इसीलिए हम ज्यादा बता भी नहीं रहे, बिकॉज वो धीरे धीरे जब खुल के आएगी तब आप सबको बहुत मजा आएगा. बिकॉज ऑल आई कैन से इज एक बहुत इंटरेस्टिंग कश्मकश चल रही है हिंदुस्तान में आजकल. भारत और इंडिया, 2 थॉट प्रोसेसेस जो उभर के आए हैं पिछले 7, 8, 10 साल में, भारत वर्सेस इंडिया. तो द फिल्म डील्स विद दैट साइकोलॉजी ऑफ कैसे लोग बदल रहे हैं सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी कैसे असर कर रहे हैं और आपके उतार चढ़ाव क्या होते हैं जब व्हेन यू आर सो इन्फ्यूज्ड इनटू द सिस्टम. उसके बाद फिर से परिणीति चोपड़ा और मैं आएंगे नमस्ते कनाडा करने. वो अगले साल शुरू होगी. उसके लिए थोड़ा टाइम है. तो इस वक्त दिवाकर सर की तैयारी चल रही है और नमस्ते कनाडा पे अगले साल शूटिंग और रिलीज की तैयारी होगी. बस इस वक्त तो वही चल रहा है और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ. हाय अर्जुन. हाय मैम, हाउ आर यू? जी. अर्जुन, आजकल लड़कियों को भी स्पोर्ट्स में बहुत आगे बढ़ते देखा जा रहा है. आप उनके बढ़ावे के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं पर्सनली कि आप एफसी पुणे सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं. मैं चलिए दोनों की तरफ से देख. एफसी पुणे सिटी में भी क्या लड़कियों की भी टीम है? मैं जानना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता है. तो हम लोग इस बार, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, कि बहुत मुश्किल था एक गर्ल्स टीम को उतारना, बिकॉज जनरली उनकी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस नहीं होती है. और मोस्ट ऑफ द जो गर्ल्स टीम है वो उड़ीसा और मणिपुर से आती है. जो इंडिया की टीम है, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो वहाँ से आते हैं. तो बहुत मुश्किल था हमारे लिए एक टीम को गैदर करना और एक प्रैक्टिस करके उतारना. हमने इस बार अबाउट 30 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया ऑल इंडिया. उसमें से 6 नेशनल लेवल पे गई एंड वी रीच द टॉप 4. और हम उनको लगातार ट्रेन कर रहे हैं. बल्कि एक लड़की के बारे में जिसके बारे में मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ, शी इज़ 13 years old. हर नेम इज सेनोरिटा. शी इज़ शॉर्ट. मुझे तो नाम से प्यार हो गया. सेनोरिटा. And she
she was not in the playing main 11, but we always thought that it's important to take her for the national level. She went there, she scored a goal in there, and that makes us, actually ये किसी को मालूम नहीं है कि she is probably a world record holder for the youngest player among men and women to score a goal in the national league. Oh wow. So, And I think so that's we are amazing. promoting a lot women as well, women football as well. I would like to do much more. अभी हमारा structure इतना अच्छा नहीं है, but we would like to play a bigger role in growing women football. अर्जुन आप अलग से कुछ जी जी मैं वेट कर रहा था कि वो खत्म करे। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए ये बहुत ज़रूरी पहलू है जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जब हम इन विषयों पे चर्चा करते रहते हैं, उसका नतीजा हमारे सामने क्या दिखाई पड़ता है कि इक्वालिटी इसलिए नहीं है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कम है, मौके कम मिलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि काबिलियत कम है, मौके कम है क्योंकि नज़रिया बदलना पड़ेगा लोगों का। तो जब इंडियन क्रिकेट टीम फॉर विमेन जब जाके सक्सेसफुल होती है तब नज़रिया बदलना शुरू होता है। जब सानिया मिर्ज़ा अपने रैकेट से जीत के आती है, जब साइना की वजह से हमें जीत मिलती है, जब हम दंगल जैसी फिल्म देख के समझ पाते हैं कि औरतों की क्या काबिलियत है, तब जाके एक नज़रिया बदलना शुरू होता है। मैं ये मानता हूँ कि हम उसके बीच में हैं। एक जो नज़रिया बदलने का माहौल होता है वो इस समय चल रहा है। मी पर्सनली आई एम अ फर्म बिलीवर दैट एट अ चाइल्ड लेवल, जब बच्चे होते हैं तब आप भेदभाव नहीं करोगे लड़का और लड़की में। अगर उनको दोनों को मौका दोगे टू परस्यू वट एवर स्पोर्ट दे वांट, वी विल सी मेनी मोर सक्सेसफुल विमेन एथलीट्स। अनफॉर्चुनेटली बच्चों को जब स्कूल जाना होता है तो हम नॉर्मली माँ बाप अगर एक चुनना होता है तो लड़के को ही चुनते हैं। अब जब आप स्कूल नहीं जाओगे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, आपको माहौल नहीं मिलेगा उभर के आने का। और हमारे फेडरेशंस भी अभी मुझे लगता है अभी समझ पाए हैं कि यार वी हैव टू सपोर्ट द विमेन कॉज, वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज समथिंग आउट देयर फॉर द विमेन टू लैच ऑन टू। अपनी एजुकेशन को साइड में रखना, एक स्पोर्ट को परस्यू करना, अपने घर के बारे में ना सोचना। देखिए औरतों पे ज़्यादा प्रेशर होता है बिकॉज दे हैव टू लुक एट देयर एज, बिकॉज शादी की बात आ जाती है, फैमिली की बात आ जाती है। सो वी हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर दोज प्रेशर्स आर रिलीज्ड and they're allowed to believe and fly. So I feel that will happen. I do believe that because like I said, the cricket team is a fine example. I mean, Mithali, they're fine examples. They have made a lot of women, a lot of young girls believe. I think Sania has been an amazing example, and the way she conducts herself. And the fact that the families have been so supportive. जब आप दंगल देखते हो तो आपको समझ में आता है कि एक फादर ने जो सपोर्ट दिया था, जो हार्ड लव देने के बावजूद बहुत कठिनाइयों का सामना करके उन्होंने जो सक्सेस हासिल किया वो किया, फिर भी उनको वो वैल्यू अब जाके ज्यादा मिल रही है क्योंकि एक फिल्म बनी उनके बारे में। तो मैं पर्सनली अकेले कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि मैं एक भेद भाव जो होती है वो भावना निकालूं पहले। तो आई वुड लाइक टू मेक श्योर दैट द इक्वालिटी वर्ड is not only spoken but it is used in the thinking on a day to day basis. I think वो शुरुआत हम सबका नजरिया बदलेगा तो हम अपने आप हिंदुस्तान से इतने काबिल लड़कियां हैं वो सब उभर के आना शुरू हो जाएंगी। Hi Arjun. Hi. Oh, yeah. Hi, how are you? Yeah, I'm fine. Congrats for being the brand ambassador and co-owner for the Thank you so much. City. I want to know that now that you are the co-owner and brand ambassador, so what changes or improvements would you like to incorporate in the whole team and all? The thing is, it's not that I'm going to come in and disrupt what they're doing because they've been doing a fantastic job. It's at a very about some ideas which you can add. Yeah, so it's at a very nascent stage as a club. We are 4 years old. This is the 4th year. We are going into our 4th year. 4 years is not enough time to implement everything. You have to build the foundations. I'm very happy, like when he speaks about having an academy, having kids from across the country coming to learn, to play, to enjoy themselves, to be free of that pressure of how will they get an opportunity. That I feel is fundamental. For me, that's very important because any sport can only go ahead if you have local talent that comes and emerges out of it. I think that's very important. For me, my idea is pretty simple here. I have only one ambition in mind. I would like FC Pune City to give India its first global footballer. And that's a very, very big ambition, but it is an ambition that I have that 4 साल लगे, 5 साल लगे, 6 साल लगे, 10 साल में I would like to make sure कि हमारे क्लब की वजह से एक उभरता हुआ सितारा दुनिया भर में पहुंच पाए. I think that for me is an ambition. I don't have small plans. I have a very big plan actually. All the best for you. Hope that we achieve that. We hope that we achieve that. Of course we will. Thank you.
चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। फोटो तो मिल गई होगी, मैं जा सकता हूँ? अच्छा चलिए आ जाइए। सॉरी यार, मैंने तेरा काम खत्म कर दिया। मैं नहीं, तू no बोलने वाला था, मैंने बोल दिया। Thank you. Both of y'all. You want a picture with both of y'all? They want. हाँ वो फोटोज होने के बाद। Thank you, everyone. Thank you, thank you, thank you. Thank you. So we're going to take a look at the video once again, and then I request an. गुड आफ्टरनून। ये धुंध के साथ जो आपको फोटोज मिलने वाली और वीडियोस मिलने वाले हैं, इससे ढासू एंट्री लाइफ में नहीं हो सकती थी मेरी। मजा आ गया। साथ में हम एंटी पोल्यूशन ड्राइव की भी बात शुरू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग ऑल ऑफ यॉल। थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। और आई थिंक गौरव ने वो सारी बातें कर ली है जो मैं भी करना चाहता था। आई थिंक टू एम्फसाइज एंड अंडरलाइन द लव that we are all sharing for the sports along with cricket that are evolving in India. I feel very, very happy and humbled to be part of it at such a big level and at such a day-to-day intricate level. पर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे 5 साल गुजर चुके इंडस्ट्री में। मेरी शुरुआत आप सबके सामने हुई है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बैठे जो मुझे शायद थोड़ा पहले से भी जानते हैं। आप सब लोग मेरी तस्वीरें खींचते हो, आप सब लोग बातें करते हो, हम फिल्मों के बारे में मिलते हैं, अलग अलग विषय पे बातें होती हैं। मेरे लिए at a very personal and intimate level, as a human being, as somebody who's had aspirations and ambitions as a child, as a boy growing up, who's had dreams, today is a big realization. मेरे लिए बहुत बड़ी achievement मैं कहूँगा है कि मैं एक टीम का हिस्सा बन पाया हूँ बतौर ओनर। ये जो शब्द है ओनर, ओनरशिप जो होती है, कहने के लिए बहुत आसान होता है। It takes you years to reach that level where you can actually feel the ownership of something. And I'm very, very, very happy to affiliate with and be part of FC Pune City because they've given me a chance to realize a dream that I've had since I was growing up, to feel like I've achieved and a milestone and a landmark in my career and my life. And I think today is a very important day, and thank you for coming and sharing it with me. And thank you for giving me this opportunity and the platform. Thank you so much for coming here, all of you. Thank you so much. Arjun, we'd like to just welcome you with a bouquet of flowers and our team scarf of FC Pune City. Of those dreams coming true, and we have a small promo for all of you all to watch. Can we have the promo, please?